अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ में, जो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स में आता है। सो बेसिकली ग्राफ इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर is a collection of nodes that have data and are connections to other nodes, जिनमें डाटा और कनेक्ट डाटा भी होता है और उनके कनेक्शंस होते हैं अदर नोड से। मोस्ट precisely a graph is a data structure VE that consists a collection of vertex V and a collection of edges E, represented are ordered pair of verticals U and V. ग्राफ टर्मिनोलॉजी क्या होती है? ग्राफ टर्मिनोलॉजी adjacency होती है. A vertex is said to be adjacent to another vertex if there is an edge connecting them. Vertex 2 and 3 are not adjacent because there is no edge between them. Path: a sequence of edge that allows you to go from vertex A to vertex B is called a path. 0 minus 1 minus 0 to 1, 1 to 2, and 0 to 2 are path from vertex 1 to vertex 2. Tactic graph: a graph is which an edge UV doesn't necessarily mean that there is an edge as well. The edge is such a graph are represented by arrows to show the direction of the edge. अब कुछ ग्राफ के टाइप्स आ जाते हैं जिसमें ब्रीथ फर्स्ट सर्च होता है. ब्रीथ फर्स्ट सर्च को BFS भी कह सकते हैं. Traversal means visiting all nodes of the graph. Breadth first traversal or the breadth first search is a recursive algorithm of searching all the vertex of a graph uh, or data structure. BFS all का algorithm क्या होता है? A standard BFS implementation puts 8 vertex of the graph into one of two categories: visited, not visited. The purpose of our algorithm is to mark each vertex as visited while avoiding cycles. The algorithm works as follows. Start by putting any one of the graph vertex at the back of the queue. Take the front item of the queue and add it to the visited list. Create a list of that vertex adjusted nodes. Add the one which aren't in the visited list to back of a queue. Keep repeating steps 2 and 3 until the queue is empty. This is the algorithm of BFS. अब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करते हैं, जिसको DFS भी करते हैं. डेप्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट, इसको ट्रैवर्सल भी कहते हैं. इज अ रिकर्सिव algorithm of searching all the vertex of a graph or tree data structure. Traversal means visiting all the nodes of the graph. अब इसका algorithm क्या होता है? इसका algorithm मिनिमम सेम होता है, बस इसमें होता है starting by putting any one of the graph vertex on the top of the stack. ये stack के ऊपर काम करता है. Take the top item of the stack and add the visited list. इसके भी तकरीबन सेम स्टेप्स हैं. BFS से रिलेटेड ही है, लेकिन बस BFS क्यूब में काम करता है और DFS स्टैक में काम करता है. अब कोई स्पैनिंग ट्री आ जाता है. जो स्पैनिंग ट्री इज अ सब ग्राफ ऑफ अनडायरेक्टेड कनेक्शन ग्राफ which includes all the vertex of the graph with a minimum possible numbers of edges. If a vertex is missed, then it's not a spanning tree. स्पैनिंग ट्री की कुछ एग्जांपल्स हैं. यानी कि अगर ये पहली एग्जांपल है A B C1, अगर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो हम मिनिमम नंबर ऑफ़ एजेस, यानी हम एजेस को जो लाइंस होती हैं नोड्स के दरमियान, उनको मिनिमम इस्तेमाल करते हुए भी हम कैसे सबके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, इसको एक स्पैनिंग ट्री कहते हैं. जिस तरह की डायग्राम 2 में गया कि उसमें 4 एजेस, इसमें 3 है, लेकिन फिर भी चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है इनडायरेक्टली. Minimum spanning tree is a spanning tree in which a sum of the weight of the edges and minimum is possible. जैसा कि मैंने आपको बताया कि edges उसमें कम होनी चाहिए. अब एग्जांपल भी इसकी यही है. मिनिमम में आ जाता है उसकी कुछ वैल्यूज़ जिसमें सम करके उसका सम निकाला जाता है.
अब Prim's algorithm is a minimum spanning tree algorithm that takes a graph as input and finds the subset of the edge of that graph from a tree that includes every vertex as the minimum sum of weights among all the trees that can be formed from the graph. ये प्रिज्म algorithm की definition है. इसका algorithm ये it falls under a class algorithm. Every algorithm find the local. The steps of implementing Prism algorithm is initialize a minimum spanning tree with a vertex chosen at random. Find all the edges that connected the tree to new vertex. Find the minimum and add to it to the tree. Keep repeating step 2 until we get a minimum spanning tree. This is how Prim's algorithm works. इसकी कुछ ऐसे एग्जांपल हैं. इसमें इन्हीं हमें सम निकालना होता है और मिनिमम एजेस हमने काउंट करने होते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करें और हर किसी का वैल्यूज सम करके निकालें. देन एट द एंड हम मिनिमम एजेस को यूज़ करते हुए सारे को आपस में कनेक्टेड रखते हुए एक ग्राफ बनाएं. क्रूस्कल algorithm में ये काम करता है from a tree that includes every vertex has the minimum sum of the weights among the all trees that can be formed from the graph. A Kruskal algorithm is a minimum spanning tree algorithm take graph input and find the subset of the edge of the graph. अब इसका algorithm ये होता है sort all the edges from low weight to high. यानी low से high में sort करता है. Take the edges with the lowest weight and add to it the spanning tree. If adding the edge creating a cycle, then it reject the edge. यानी cycle create नहीं होने देता इसमें. Keep adding edges until we search all vertex. इसमें इसकी भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं. अब ये algorithm आ जाता है जिसमें allows to find the shortest path between any two vertex. It differs from the minimum spanning tree because the shortest distance between two vertex might not be included at the vertex of the graph. अब इसका algorithm क्या होता है? इसका algorithm होता है works on the basis of any subpath B to D of the shortest path A to D between a vertex. A and D is also the shortest path between vertex B and D. It is used to, this property is the positive directional. We overestimate the distance of each vertex from the starting vertex. Then we visit each node and its neighbors to find the shortest path of those neighbor. ये algorithm ऐसे काम करता है. तो ये थी मेरी ग्राफ के ऊपर वीडियो. बहुत शुक्रिया.